Hello everyone, welcome to the YouTube channel of Legal Darshan. In today's video, we are going to talk about hearsay evidence. So we will be dealing with what is an hearsay evidence, what is its admissibility, and what are its exceptions. Starting with hearsay evidence, rule of evidence says that hearsay evidence is no evidence. हमारा इंडियन एविडेंस एक्ट जो है वो 3 रूल्स पे बेस्ड है. दैट बेस्ट एविडेंस इज टू बी गिवन. हर चीज का जो एविडेंस दिया जाएगा वो बेस्ट एविडेंस दिया जाएगा. अगर हमें किसी मार्कशीट की फोटोकॉपी सबमिट करानी है तो दैट इज अ गुड एविडेंस. बट अगर वो मार्कशीट हमारे पास ओरिजिनल है, stamped original authority से stamped है, it becomes the best evidence, right? So first rule of evidence is that best evidence is to be given during a trial. The second point is that only relevant facts is to be proved. जो भी हमारा fact in issue है, जो भी हमारा कंटेंशन है, जिस मैटर पे डिस्प्यूट है, उसके रिगार्डिंग कोर्ट में जो सबूत दिए जाएंगे, जो प्रूफ दिया जाएगा, वो सिर्फ रेलेवेंट फैक्ट्स का ही दिया जाएगा. फॉर एग्जाम्पल, अगर डिस्प्यूट है कि इफ देयर इज अ मर्डर और कल्पेबल होमिसाइड, तो आप सिर्फ उन बातों से रिलेटेड रेलेवेंट फैक्ट्स दे सकते हो, जैसे अक्यूज्ड जो है वो उस एट द टाइम ऑफ एक्ट कहाँ था, where he was present, what he was doing, did he had any rivalry with the deceased, क्या उसकी कोई दुश्मनी थी. इन तरह की बातें जो कि उस मर्डर से या कल्पेबल होमिसाइड से रिलेट कर रही हैं, सिर्फ उन्हीं का हम प्रूफ देते हैं. हम इस बात का प्रूफ नहीं देंगे कि मर्डर की डेट के 4 दिन पहले जो अक्यूज्ड था वो अपने घर पे बैठकर टीवी देख रहा था. दैट इज नॉट टू बी प्रूव बिकॉज इट इज नॉट अ रेलेवेंट फैक्ट. Then the third point which we are going to deal with in this video is hearsay evidence is no evidence. Evidence law के according hearsay evidence एक अच्छा evidence नहीं है. ये एक negligible evidence है, ना के बराबर evidence है. But however, law has exceptions. Law has a lot of exceptions. तो हमारे पास कुछ hearsay evidence की भी exceptions हैं, जिन केसेस में कभी कभी हियरसे एविडेंस जो है वो एडमिट किया जा सकता है, एडमिसिबल होता है कोर्ट्स में. किन केसेस में होता है दैट वी विल बी डीलिंग फर्दर, बट फॉर नाउ हियरसे एविडेंस इज नो एविडेंस एंड दिस इज द थर्ड रूल ऑफ एविडेंस. कही सुनी बातों की गवाही अगर कोर्ट में दी जा रही है तो उसको हम एविडेंस नहीं मानेंगे. दिस इज व्हाट हियरसे एविडेंस इज इक्वल्स टू नो एविडेंस रूल सेज. Moving on to a next point, what is in hearsay evidence? What exactly is hearsay evidence? I have explained it to you कि कहीं सुनी बातें जो हैं वो कोर्ट में गवाही के रूप में नहीं दी जा सकती. If I have heard from a person that B has married C and C has married again A, C has got married to A, but I have heard it from a person Z. So I cannot go to court and I cannot say that I know I am giving you an evidence. Court will say that no, it is not an evidence. आपने वो शादियां होते देखी ही नहीं है. Then how are you giving the evidence? Evidence गवाही आप उसी चीज की देते हो जो आपने देखा है, जो आपने सुना है, जो आपके सेंसेस ने परसीव किया है. आप किसी की सुनी हुई बातों को गवाही में की फॉर्म में कोर्ट में प्रेजेंट नहीं कर सकते. काफी बार लॉ एंट्रेंस में ये क्वेश्चन आता है कि एक्स ने सुना वाई ने जेड की घड़ी चुरा ली है, तो क्या एक्स जो है वो कोर्ट में गवाही दे सकता है? वेदर द एविडेंस, द स्टेटमेंट गिवन बाय एक्स इन द कोर्ट which he heard from somebody else, will it be a good evidence against Y? So the answer is no, because it is what? It is a hearsay evidence. Like we can see in this pictorial representation, A says to B that I saw D stabbing his wife. Now, A is a direct witness. A is the person who witnessed D stabbing his wife. He tells it to B. Now, if B goes into the court and on the oath, this is the oath, and on the oath he says that A said to me that he saw B stabbing his wife,
then court will not take his evidence. Okay, court will be saying that it is a hearsay evidence. It is just based on an information you received from some other person, and it is not something that you perceived, that you have seen, or that you have heard, or that you have witnessed through your own senses. Moving on to the next point, I hope hearsay evidence is clear to you. What is a hearsay evidence? Now, एविडेंस एक्ट के कुछ सेक्शंस हैं जो ये बताते हैं कि hearsay evidence का exception है. First, exception. दो तरह के exception है हमारे पास. One is the strong exception and another is the weak exception. जो हमारे पास strong exception है वो dying declaration है, और दूसरा strong exception हमारे पास expert opinion है. The weak exception is res geste. Res geste is that things that form the part of same transaction, they are relevant. The students who are studying Evidence Act or who have studied Evidence Act, a lot of people who are aspiring for services, they must have studied Evidence Act. They will be knowing what res geste is. Okay, we will be explaining it in the later part of this video. But for now, we are going to focus on strong exceptions. All right. So the first strong exception is dying declaration. Dying declaration जो किया जाता है वो एक ऐसे पर्सन से की ऐसा पर्सन करता है जो कि he is about to die, but it is not relevant whether he knew that he was about to die or whether he did not know. अगर ऐसा पर्सन जो डाइंग डिक्लेरेशन दे रहा है, जो कोई ऐसी स्टेटमेंट दे रहा है मरने से पहले जो कि उसके मर्डर या फिर उसकी डेथ या फिर जो प्रोसेस है जिससे उसकी डेथ कॉज हो रही है, अगर उससे रिलेट करती है, वी कॉल इट डाइंग डिक्लेरेशन. डाइंग डिक्लेरेशन किसी को भी दिया जा सकता है. द पर्सन हु हैज डाइड, अगर उसने अपनी डेथ के रिलेशन में, डेथ के कॉज में, कॉज ऑफ एक्शन में कोई रेलेवेंट स्टेटमेंट बिफोर हिज डेथ दी है, either to his family, to his acquaintance, to his friends, to an authorized person like judicial magistrate, like a judge, like a district magistrate, like a collector, like a police officer, like a doctor, then in that case जो डॉक्टर है, जो पुलिस ऑफिसर है, इवन जो फैमिली मेंबर्स हैं, अगर वही बात वो कोर्ट में आके बोलेंगे तो कोर्ट उसे हियरसे एविडेंस नहीं कहेगा. व्हाई? बिकॉज जिस पर्सन ने वो स्टेटमेंट दी थी वो पर्सन की तो डेथ हो गई है. ही कैन नॉट कम टू द कोर्ट, राइट? दैट इज व्हाई डाइंग डिक्लेरेशन इज एन एक्सेप्शन टू हियरसे एविडेंस. तो जो बातें उसके रिलेटिव कह रहे हैं कि मरते टाइम मुझे मेरे बेटे ने, मेरे हस्बैंड ने, मेरी डॉटर इन लॉ ने, मेरी मदर ने ये बात बोली है और ये बात मैं कोर्ट में प्रेजेंट कर रहा हूँ, it will be called a dying declaration and court will not call it hearsay evidence but an admissible dying declaration. Then it is given in section 32 clause 1 of the Indian Evidence Act. Then the next point is expert opinion. Expert opinion is given in section 45 to section 51 of the Indian Evidence Act. Who is an expert? Court is intelligent when it comes to legal issues. Court is intelligent when it comes to interpretation of statutes and constitution. But we cannot expect an entity to be knowing every aspect. A judge, an advocate might not know that what is medical science about. He might not know about what arts are about. So when the court has to take an opinion on some scientific purpose, on some artistic purpose, they can refer to experts. A reference is made to experts by the advocate of the litigating parties. Even court can refer the matter to experts. For example, handwriting expert, for example, forensic expert. So the opinion given by expert is reiterated in the court by the advocates or by the litigating parties. So such kind of opinion can also not be said to be a hearsay evidence. Expert ने कहा, एडवोकेट ने कोर्ट के आगे प्रेजेंट किया, या पार्टी ने कोर्ट के आगे गवाही में कहा, कोई भी ओपिनियन जो एक्सपर्ट ने दे रखा है, दैट वोंट फॉल अंडर हियरसे एविडेंस. क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है, एक्सपर्ट कुछ कह रहा है, उसकी बात को पार्टी या एडवोकेट रीआइट्रेट कोर्ट में कर रहे हैं,
तो कोर्ट ये नहीं कह सकता that it is a hearsay evidence because it falls in the category of section 45 to section 51, which we call as expert opinion. Moving on to the third and last exception, which is also a weak exception of this principle that hearsay evidence is no evidence, res geste. What res geste is a very long story which we will be dealing in a next video, but for your information, I can inform you that res geste is the things that form the part of same transactions, they become relevant while deciding a matter. So if there is a question that whether murder was caused at an XYZ place or not, okay, so let's take a scenario that there is a place, एक जगह है जहां पे किसी पर्सन एक्स का मर्डर हुआ है. अब वो मर्डर किसी ने होते हुए नहीं देखा, बट एक छोटे से 5 साल के बच्चे ने देखा कि somebody was stabbing someone else with a knife. Now that child got afraid and he ran in the direction of his house. अब जब वो बच्चा अपने घर की डायरेक्शन में भागता जा रहा था, वो बोलता हुआ जा रहा था, वहां पे मर्डर हुआ है, किसी ने चाकू मार दिया है. सो उन सभी लोगों ने, जिन लोगों ने उसकी बात सुनी, वो उस क्राइम सीन पर चले गए. ओके, सो अब जो लोग क्राइम सीन पर गए, उन्होंने ये बात किसी बच्चे से सुनी थी. तो इफ दे आर कॉल्ड इनटू कोर्ट और वो ये कहेंगे कि एक बच्चा चिल्लाता हुआ जा रहा था, वहां पे देयर इज अ ब्लड शेड, देयर इज अ मर्डर, सो इट कोर्ट विल consider it under res gestae and not hearsay evidence. But as I told that it is a weak exception. It can only be used where there are other important evidences available. So it can be used as a corroborative evidence, but it cannot be used as a full form of evidence or as a primary evidence or as the best evidence, because it is just an assisting evidence, like it is giving a push to the already present evidences in the trial. So that is all for today's video. I hope you like this concept. If you like the concept, please hit the like button. Don't forget to subscribe and share to the channel. Please drop the reviews and feedbacks in the comment box below. Stay tuned with us. Thank you for watching this video. Have a great day.